Good afternoon, everyone. Lot of messages. Yes, Mayurji, I'm here for you all, guys. Anuj is not available today because he's not doing well. So before we start the session, guys, let me welcome you. Welcome everyone for the Nifty expiry. आपने निफ्टी तो देखा होगा आज लाइफ टाइम हाई किया था अबाउट 25,000. So we have Shivangi Sarda with us. So before I hand over session to her, let me go through all the trade that we had given in the early morning. हमने सुबह FSL का इंट्रा दे दिया था जो कि इन बिटवीन द सेशन ही प्रॉफिटेबल हो गया था. जीसर का स्टॉप लॉस हिट हुआ इन टर्म्स ऑफ इंट्राडे जो हमने दिया था. ऑल्सो वी हैड सजेस्टेड कोल इंडिया फॉर CDI कॉल. हमने उसका बाइंग रेंज कहा था 538 सॉरी सो हमने उसका बाय सजेस्ट किया था 538 के अराउंड. द हाई इट मेड वाज अराउंड ऑफ 541 एंड करंटली वो उसके बाइंग लेवल पे ही ट्रेड कर रहा है. सो दिस इज जस्ट एन अपडेट फ्रॉम ऑल द ट्रेड्स दैट वी हैव सजेस्टेड. Yes, Shivangi, please let me know if you can hear me. Hi, yes, Avinash, I hear you. Sure. Okay, so members are waiting for you. Over to you, session. Let me know when we are good to go. Yeah, good to go. Okay, over to you. Hello, everyone. Welcome to Thursday Nifty Expiry. Of course, Thursday को Nifty होता है, and thank you so much. इतने warm welcome messages आ रहे हैं मुझे. Uh, yes, okay. तो मैं quickly share कर देती हूँ अपना screen and just discuss what the view is. Right. Yeah, I hope you can see my screen. So basically, आज हमने देखा है we've hit a fresh all-time high of 25,000 marks and काफी historical है because जब भी हम 1,000 points का rally देखते हैं it's very crucial for the entire sectors index. But थोड़ी बहुत profit booking है higher zones पे. We touched lifetime high of 25,078. And after that we witnessed काफी range bound movement, थोड़ा सा selling pressure भी देखने को मिला है. But overall we are still tracking the call side क्योंकि हम देख रहे हैं कि overall setup जो है वो काफी positive है. 15 minutes का frame अगर मैं करके देखती हूँ, so there is some sort of reversal in between. But in that case हम दोनों ही of course हम दोनों ही call put दोनों ही track करेंगे. But whatever is suitable as per the movement or action वो हम focus करेंगे. So that is intra-day, intra-hour level की अगर हम बात करें for today's expiry for the next 1 hour, if one has to play, it will be 25,050 on the upside. 25,050 का एक upside level होगा, right? And support के लिए we can look at 24,900. तो ये 24,900 और 25,050 का जो एक range है वो हम play out कर सकते हैं for the next 1 hour for Nifty expiry. Now let's talk about Bank Nifty. The reason why I said that tilt हमारा थोड़ा बहुत call की तरफ इसलिए होगा because declines भी इतने full fledged नहीं है. Quick recovery आ रही है, देखने को मिल रहा है. So bulls are active at the support zones, but follow up कहीं ना कहीं missing है, which indicates that magnitude of buying is not much, but buying support zones पे काफी अच्छा है. So this is the stance for Nifty. Levels ध्यान रखिएगा. And अगर हम call की बात करें तो हम यहाँ track कर रहे हैं 25,600 का call, जो कि round about 90 के आसपास चल रहा है अभी. We'll be tracking this call and इसमें अगर कोई setup होता है so we'll let you know accordingly. Let's quickly talk about the levels of Bank Nifty क्योंकि समझना important है कि यहाँ क्या हो रहा है. Major contributors of the index. So we are seeing some sort of range bound move in the heavyweight names, और जो छोटे banking names है वो for the longest times consolidate कर रहे हैं, range bound move में move कर रहे हैं, follow up missing है. So इस कारण Bank Nifty is also underperforming from a lot of from the last few sessions. So अगर levels की हम बात करें, immediately 51,000 would be the level.
क्लोजिंग पे 51,500 विल बिकम इम्पोर्टेंट कि ये अगर इसके ऊपर क्लोज करता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ जो है वो कंटिन्यू होगा. बट इफ इट क्लोजेस बिलो दिस लेवल तो हम फिर लैकलस्टर मूव में बैंक निफ्टी में जो है ट्रेड करते हुए रहेंगे. सो 51,500 क्लोजिंग बेसिस पे आपको ट्रैक करना है, राइट. और सपोर्ट और की बात करें, सपोर्ट है 41,000 पे और अपसाइड जो हर्डल है वो है अराउंड 51 52,000. This would be the stance for Bank Nifty. Because निफ्टी में हम 25,600 का कॉल ट्रैक कर रहे हैं एंड साथ ही में हम पुट का भी एक्शन देख रहे हैं. बट टिल्ट हम देख रहे हैं कि इट्स मोर और लेस टुवर्ड्स द कॉल साइड. बट nonetheless we are tracking both the strikes. But okay, so okay, small update. हम ट्रैक कर रहे हैं 24,900 का कॉल जो कि राउंड अबाउट 80 चल रहा है, राइट. 24,900 कॉल विच इज ट्रेडिंग एट 80 रुपीज. सॉरी, गलत स्ट्राइक. आई जस्ट मिस्ड. सो प्लीज इफ यू पिन्ड इट तो आप चेंज कर देना, राइट. 24,900 कॉल ऑन रडार. ओके, सो yeah, we are tracking put as well. 25,050 का put है radar पे, तो वो भी हम track कर रहे हैं. Let's look at what's happening in the 15 minutes frame में. अभी भी कोई reversal का sign नहीं है. From the last three candles we are seeing कि lower highs lower lows बन रहा है consistently. So overall stance is somewhat mixed at this point of time. The major contributors for this 1,000-point rally have been mainly IT, FMCG, consumption names, pharma, and some of the auto names as well. Auto has been a contributor for this entire bull run from the last 3-4 years. Consistent रहा है, बहुत strong रहा है. But this 1,000-point rally में हम two wheeler space में ज़्यादा movement देखे. So if I have to talk or discuss something about the stocks, then TVS Motor is a very positive stock, which is um, showing strength at these levels as well. तो ये TVS Motor का daily frame का chart है, इसको हम देख सकते हैं. Immediate basis पे round about 2,700 के targets पे आप बन रहे हैं. So one can look at TVS Motor for a quick swing play, right? तो ये हम बिल्कुल ट्रैक करें. ओके, MCX was clearly the movement that we saw that काफी दिनों बाद एक movement देखने को मिल रहा है. अच्छा, and it's closing on the near about higher zone, higher levels पे. So MCX is also one stock which is quite positive. One can look out for this, but MCX बहुत volatile रहता है, high beta counter है. So अगर आप थोड़ा रिस्क लेने को तैयार हो तो ही आप टुवर्ड्स ये स्टॉक में आप देख सकते हो. बट राइट नाउ निफ्टी इज just round about struggling above 24,950. एक 24,950 का एक इम्पोर्टेंट बेस लेवल हम इसको समझ सकते हैं. अगर इसके नीचे ब्रीच हो जाता है तो we will go for put side, which is 25,050 का put strike. And if it manages to hold above 24,970, then we can go for call side. So these levels will help you gauge a trade for the next 1 hour. ये levels मैं इसलिए बोल रही हूँ ताकि क्योंकि कई बार क्या होता है आप इन levels को देख देख के आप play out कर लेते हो. I get a lot of messages, so that is why I'm just mentioning the levels as well. पटेल जी और कितनी हिंदी बोलूं, मुझे तो यही हिंदी आती है. Okay, Viresh is asking about Reliance. Okay, so index में जैसा हम देख रहे हैं कि follow up missing है और लेकिन support पे buying है. Reliance has a similar structure like that. Although बाकी के जो competitor stocks है इस पूरे space में that are comparatively doing better off than Reliance, but काफी एक movement रहेगा index का भी. एक tailwind मिलेगा इस stock को भी. So right now it's range bound, but we are expecting it to remain at these levels.
So यहाँ से कोई downfall या quick up move नहीं expected है. So one can look at maybe 3000 and जो next है 3100 would be important to look at. Okay, let's quickly look at Nifty क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा movement दिख रहा है. It's right now trading above 24,980. So quickly हम call side में देखते हैं. We can shift to 24,950 call as well if required. That is trading near about 50, right? तो इसको हम track कर सकते हैं. We will look at buying the 24,950 call near 35 to 40 के range में. 35 to 40 के range में हम 24,950 के call को buy करने के लिए ready होते हैं. And you know अगर हमने ये स्ट्राइक जो है अगर हमें 35 to 40 के रेंज में मिल जाता है, so 25 would be our stop loss and targets would be around about 70. Okay, so right now the call is near 52 rupees. So one can look at this call. I'll just take up a few stock queries later. हम निफ्टी के एक ऑप्शन में movement capture कर लेते हैं and then we'll definitely go for the stocks as well, right? Sure. So 24,950 के कॉल को हम देख रहे हैं, right? Okay. So look at the 15 minutes frame और यहाँ पे काफी अच्छा reversal देखने को मिल रहा है, negation देखने को मिल रहा है, which is clearly indicating that bulls जो है वो पूरे buying के spirit में है. Right now the call is trading at 52 पे trade कर रहा है ये, and it's not really giving up. तो 52 के रेंज में है. आप बाय कर सकते हो. दिस इज अ बाय कॉल. 52 के रेंज पे 50 के आसपास आप बाय कर लो. एंड द स्टॉप लॉस वुड बी 35. वी आर रिवाइजिंग द लेवल्स क्योंकि निफ्टी इज नॉट गिविंग अप. 35 का एक स्टॉप लॉस रहेगा एंड 75 का टारगेट्स रहेगा, right? 75 will be the first target and then we'll look at 90, but 75 would be the immediate target. So 52 के रेंज में आपको बाय करना है ये कॉल. Right now it's at 50 exact. So I'm sure आप सबको एक buying price अच्छा मिल गया होगा because right now the call is at 50, right? So I'm sure everybody, and it's halted like for a minute, so I'm sure like a lot of people have got the buying range. Exactly, and उसमें momentum भी हमें दिख रहा है, it's trading near 60. Okay, right now it's 60. The call is at 60, correct? Thank you, Avinash. So actually momentum hai. Nifty is now holding at 25,000, which is quite positive. अगर हम ये close towards 25,000 करते हैं, that indicates that कल का session भी एक positive note पे opening होने वाला है. And the Fed has relaxed and हम expectations भी देख रहे हैं rate cuts का. So all these factors are moving in favor for the index. Right now the call is at 60, right? So bank nifty में catch up rally जो है वो हम expect कर रहे हैं, but rollovers have also been quite positive to okay here. तो हम ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बैंक निफ्टी का जो हैवी वेट स्टॉक्स है, क्योंकि वो स्टॉक्स जो है वो स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, सो वहां पे एक मूवमेंट रहेगा. सो दिस विल ऐड टू द अनदर 1000 पॉइंट रैली इन निफ्टी. बट यस, ऑफ कोर्स इट्स अ 3-4 week process. Okay, so we are seeing the Nifty 24,950 call is at 60 odd levels. So we have saw some dip in it as well. तो जिनको शायद मैम re-entry नहीं मिला, can they enter at the current level क्योंकि एक ऊपर से जाके आ चुका है. You're on mute, शिवांगी.
Yes, so basically I am seeing like अगर हम इसका 5 minutes chart भी अगर हम देखें निफ्टी का, so here we are seeing consistent जो है movement नहीं देखने को मिल रहा है. There is movement and then there is consolidation. So I would recommend कि आप re-entry मत करिए, because जो movement था वो 60 के आसपास का, राइट, वो अभी काफी अच्छी तरह से मिल गया है. ये 10 स्विंग्स हम ज्यादा मूवमेंट नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं. दैट इज द रीजन व्हाई आई एम टेलिंग यू री एंट्री नहीं करने. दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू 60 जो एक टच हुआ 70 75 मैक्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उससे ज्यादा नहीं. सो दैट इज व्हाई आई वुड सजेस्ट कि री एंट्री ना करें. Many a times we see that the momentum does pick up after 2:45 or after 3 o'clock. But as of now, pick up नहीं होते हुए दिख रहा है. Even if you look at the 5 minutes frame chart, आज पूरे दिन आप देखोगे ऐसे ही हुआ कि बहुत ही स्लो ग्रेजुअल अप मूव या ग्रेजुअल डाउन मूव हुआ है. So there wasn't wild swings, but of course range bound जब भी रहता है निफ्टी, तो हमें ऑप्शन में ज्यादा बड़ा स्विंग नहीं मिलता है. It's kind of quite muted, तो इसीलिए री एंट्री नहीं करना है. So Call, okay, Vishal is asking if we can hold the call for a few days. आज ही के expiry की बात हम कर रहे हैं. We are looking at 1st August expiry, so you can't hold the call more than today. But if you're talking about the other strike options के call, तो it is always advisable कि अगर आप overnight कुछ भी hold कर रहे हो, it should be hedged. Like you can go for a bull call spread or a bear put spread as per your view, right? आप naked buying या naked selling आप hold करना advisable नहीं होगा. Naked buying hold nahi karna advisable, because there is a lot of time decay that happens, and that will reduce the premium of your call option. And naked selling is advisable only if you have the risk appetite, only if you have the margin to do so, right? There is not much of a momentum here. तो अभी कॉल जो है 55-57 के आसपास चल रहा है. आपको अगर मौका मिले, 57 है अभी, so जैसे मौका मिले आप exit कर सकते हो, because momentum is clearly not there. But we did capture 10 point movement. इससे ज्यादा हम expect नहीं कर रहे हैं. So yeah, you can exit the trade. But rightly said. अभी कि आपने थोड़े प्रॉफिट बनाए, but प्रॉफिट में तो कटा आपका ट्रेड. So that is a good thing. Okay. Akash ji is asking Shivangi's ma'am name. So Akash ji, Shivangi doesn't need an introduction. You can follow her on LinkedIn, on Twitter as well. Her name is Shivangi Sarda. And yes, Shivangi ma'am, actually, we see a dip in this call as well. So जिन लोगों ने भी 10 points का swing capture किया है, kindly book your profits and exit the trade. And if there will be any new potential trade, Shivangi ma'am will definitely gonna update us. Ma'am, meanwhile, can we take few stock queries, then we'll Yes, head up for yes, the BPST trades as well. perfect. We'll take up a few stock queries, but before that, the call is now at 59-60 levels. तो आप जो है 58 पे अभी, तो आप I'm sure you all have also exited comfortably, because 50 पे भी काफी देर halt किया था entry के time पे, and now also it's at 60. The call is at 60 और अभी भी काफी देर तक यहाँ halt कर रहा है. So I'm sure this it was a small swing, but I would say that it was a very easy swing, right? So I'm sure all of y'all must have captured very well, right? Okay. Okay. Mayurji Now, gave the introduction about you, Shivangi ma'am, that if you search Nifty Queen on Google, you will definitely find a name. So we'll move ahead from this. Yeah, definitely Mayurji, Shivangi ma'am's thank name. you so much. Thank you so much. So ma'am, let's हम move. try करते हैं कि जितने points, जितने swings capture हो पाए. Of course, जिस दिन हमें conviction नहीं होता है, we also tell you to not trade anything. But today we could capture that some small swing that we got. Okay. Avinash, we quickly take up few of the stock queries, and BTST के लिए I'll just quickly update one stock, which is Tata Power, which is looking very nice. सारी power space में बहुत अच्छा action है, and there is buying after this stock surpassed its supply zones.
तो अगर मैं यहाँ पे एक if I have to make a trend line, this is what my supply zone looks like, this line. But इसको surpass करके बहुत strong यहाँ पे buying देखने को मिला है. So which is why the stock is looking quite good. I'll just quickly make it daily frame. Yeah. So now one can buy this stock. Target जो है 485 का है and 455 का एक stop loss के साथ. So 455 stop loss and for a target of 485, one can buy this stock for a BTST trade. Okay. Now Great. I'll quickly take up a few questions, whatever 9 minutes that we have. Okay, someone's asking, आप अमित जी आप spam मत करो, ये stock वाले आपके पीछे पड़ जाएंगे. But I'll answer your question. Can we go for buying Nifty future, higher chances of holding above 25,000? So, see, guys, Nifty में हम क्या कर रहे हैं? तो basically यहाँ पे buying जरूर है supports पे, but there is absence of follow up. Buying इसलिए है तब जाके हम देख रहे हैं कि it's holding well, Nifty का एक movement जो है वो अच्छा हो रहा है, but intraday swings जो है वो काफी choppy हो रहा है. So we are expecting 25,150, 25,250. ये दो targets हैं हमारे Nifty के लिए. But I would recommend कि आप weekend की तरफ नहीं carry करो because there is a lot of geopolitical tensions as well. But also our Nifty seems to be not affected by any of it. Of course, तो यहाँ पे positive stance ही है हमारा. But for that slight comfort, you can exit your positions on the weekend. Right? Okay. So, Shivangi, there's a lot of queries going around Suzlon, and we can see a lot of upside in this stock as well. So, पंकज जी का क्वेश्चन है ये कि हम लोग करंट मार्केट प्राइस पे एंटर कर सकते हैं क्या Suzlon में? Suzlon, okay. Suzlon has been one of the favorite stocks of traders across. और हमने we've seen this stock go from round about 6 to 60. So 10 times हुआ है ये stock in a span of 1 year, 1.5 years. So definitely there's a lot of wealth creation that has happened. This entire space is also very nice if you talk about the sustainable energy जो पूरा theme है वो काफी अच्छी तरह से play out हो रहा है. But daily frame में थोड़ा बहुत profit booking है. Technically, if you speak technically, थोड़ा बहुत profit booking है. But weekly frame is all good, and we can still hold it for around about the near all-time high, which is 71 levels. तो 71 के immediate swing के लिए हम play out कर सकते हैं stock को. But guys, these kind of stocks are very volatile, and one is advised to have a strict stop loss. Stop loss अगर आपने लगाया है और आपका स्टॉक बढ़ गया है तो आप स्टॉप लॉस को आगे रिवाइज भी करो, which is called trailing stop loss, ताकि आप जितना possible हो उतना profits book भी करते रहो. So this is how you can play out for this stock, right? Okay. So before we move ahead for the next stock queries, guys, just an update. आप लोग make sure कीजिए आप लोग जो trade initiate किए थे निफ्टी में, you would have exited the trade because 2 से 3 बार शायद वो 60 के आसपास ट्रेड करके वापस नीचे आया. So make sure you have booked your profits and exited the trade. So the next query, Shivangi, is on Bharat Forge. We have recently seen upside on this and अभी थोड़ा सा profit booking दिख रहा है उसमें. So please share your insight. कहाँ पे हमें buy on dips करना चाहिए? What should be the target? Yes, absolutely. Bharat Forge has seen a good up move in the last 2 weeks. आज थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हम देख रहे हैं इस स्टॉक में, बट ओवरऑल द स्टॉक इज नाइस एंड द एंटायर स्पेस इज गुड. थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बिफोर द नेक्स्ट अप्रूव. तो अगर आप बाइंग के लिए देख रहे हो ये स्टॉक, मेरी राय रहेगी कि आप थोड़ा वेट कर लो, वेट एंड वॉच कर लो, एंड देन मे बी यू कैन गेट अ बेटर प्राइस टू एंटर. But overall, stock is quite positive. If you're holding, you can keep holding. Sanjay is asking CDSL. I'll just quickly take this up. So we've seen a good movement in the other exchange-related stocks. अगर हम बोले MCX हो गया या brokering stocks हो गया, उसमें एक अच्छा movement आया है. CDSL long-term structure is quite positive, but trading के लिए ये stock नहीं है. If you have a lot of patience, you can keep holding it for the investment point of view.
but traders can get into momentum stocks जो बाकी है, इस पे आपको necessarily trading का एक swing नहीं मिल सकता. Okay. Okay. So मैम ने कहा कि पावर स्टॉक्स में भी मोमेंटम है. व्हाट इज योर व्यू ऑन आर पावर? ओके, पावर में हमारा जो प्रेफर्ड पिक है वो डेफिनेटली टाटा पावर है, जिसमें हमने बीटीएसटी के भी एक लेवल्स आपको दिए हैं. बट आर पावर बीइंग यू नो वी हैव सीन कि यहाँ पे एक अच्छा मूवमेंट जरूर देखने को मिला है फ्रॉम द लास्ट 6-7 सेशंस. बट फ्रेंड्स, कैन यू सी द चार्ट फॉर दिस स्टॉक? जहाँ ये एक अप मूव रहता है वहाँ स्टीप डिक्लाइन भी आता है, right? And we've seen a good up move, and although at the higher zones there is some sort of still there is some euphoria, but काफी steeply ये stock जो है वापस नीचे भी आता है. So भरोसे लायक stock नहीं है. That is what I can say in a very informal manner. Great. Shivangi ji, what is your view? Nirmaljeet is holding Sun Pharma 1800 call. So उनको 30 के टारगेट तो उसको होल्ड करना चाहिए. Okay, so अगर pharma space में अच्छा movement हुआ है, but I would recommend कि आप अगर call option आपने buy किया है, या तो वो stock हो या वो index हो, I would recommend that not hold it for a longer time, because time decay is working against you. तो उसके premiums जो है वो नीचे आने वाले हैं. So if you are holding the call, Sun Pharma view अगर आपको पहले बता दूं, so it's going to be range bound, and to protect the call option that you've taken, you can sell a higher strike call option, तो वो आपका bull call में convert हो जाएगा. Your costing will reduce, margin will be margin will not be required so much, क्योंकि आपने एक call buy किया और उसके against आप call sell कर रहे हो, तो margin benefit भी आपको मिलेगा. And what will happen is कि आपका risk reward जो है वो काफी हद तक minimize हो जाएगा. So Shivangi ma'am, there's a lot of queries around the oil stocks as well, like ONGC, IOC. So what is your view on ONGC? So looking at ONGC, the stock has done quite well from the last few weeks, I would say. अगर हम इसका longer term structure देखें, तो from the last 6 weeks it's consistently making higher highs, higher lows. और इसका एक upward sloping trend line में consistently काम किया है stock ने, perfectly holding well at its exponential moving averages as well. So stock is looking quite positive. One can look for 360, 370 levels. So guys, we'll take 2 to 3 more queries. Then if there will be any more BTST trade, Shivangi ma'am, then we will look forward to it, or we'll sum up the session then. Yes, I'll just surely update if there's more BTST, and I'm there is no re-entry for any Nifty Hero Zero trade as well. जैसे हमने बोला कि थोड़े बहुत मोमेंटम कभी कभी दिख जाता है 2:45 या 3 o'clock के आसपास, तो today has not been that day. The call is still stuck at 50. हम जब ट्रेड कर रहे थे तो वो 60 पे स्टक हो गया था, और अब टाइम डीके has brought it down to 50, right? So I'm sure all of you all have exited at those levels, क्योंकि हमने आपको बहुत बार बोला. But yes, this is it for Nifty expiry. हम 2-3 और questions of course stock के ले सकते हैं. So Shivangi ma'am, what's your view on Adani Ports? क्योंकि इनका results भी अच्छा है, they have very good net profits as per the Bloomberg what they have predicted. So what is your view on it? See, Adani जो पूरा group है, it's very volatile, उसमें काफी swings रहते हैं, and इसलिए हम suggest करते हैं कि you be with the safer names so that your capital is also protected, right? So the last query will be on JSW Steel. Okay, so JSW Steel, I can see कौशल ने पूछा है JSW Steel. Okay, so steel metal pack for that matter, आज एक अच्छा ओपनिंग हुआ था ओपनिंग के लेवल्स पे, but metals का एक ही प्रॉब्लम है that it gives up at the higher levels. अगर हम इसका चार्ट स्ट्रक्चर भी देखें, consistently higher zones पे बहुत सप्लाई प्रेशर आ जाता है या प्रॉफिट बुकिंग आ जाता है, which is why the stock
fails to hold at the higher zones. So metal stocks में मेरी राय रहेगी आप entry मत करिए अभी. I would suggest there are better names like auto, pharma, power, and some of the consumption names which is looking quite positive. अगर आप एक अच्छे stock के बारे में if you want to really hold a stock for some days, it's Zomato. It's doing quite well. Sustained buying है यहाँ पे, and week on week basis पे just look at how beautiful the chart is. Consistently एक trend line को support करते हुए चला है ये stock, and one can do a short term swing over here. One can play this out, and long term के लिए ये chart structure, ये company structure जो theme है QSR का, वो बहुत अच्छे से play out करने वाला है. So this is just a extra stock that if one is willing to invest for a good a few weeks or few months, तो ये एक stock है जो आप देख सकते हो. Sure. Right? So guys, please make sure you drop your queries on Stockholm because we have a lot of queries out here and हम कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा queries address करने का. Sanjay Kumar ji did not got the explanation on the view of Adani Port. Sanjay ji, please make sure you post it on Stockholm. Our experts will be more than happy to answer you. So make sure you guys post it on Stockholm. So that's it, guys, from our end. Shivangi ma'am, can you please let me know if we have any potential BTS trade as of now? The BTST trade would be Tata Power only. That is the only trade that we are looking for BTST. And we are looking at 485 odd levels here. And up iska अच्छे, we've already mentioned the levels, but the stock is quite positive. There is a good closing also higher note pay, and looks quite positive for the next session also. Sure. So thank you so much, Shivangi ma'am, to be a part of this session. And as always, you give us a profitable session. And I even hope that the Tata Power BTST will also profitable like you give us every time. So thank you so much, ma'am, to be a part of this session. And thank you guys for joining. Make sure you join us tomorrow in the morning for the early morning trade. So thank you guys for joining. Thank you, Shivangi. Thank you so much. Bye bye. See you tomorrow.